Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Patel. Keep your charts clean. We'll start in 2 minutes. Hope everyone's week went well. Everyone's analysis is going good. Good morning, Usman. Good morning, Yogesh. Sir, I'm doing paper trade. Good morning, Venkat. फायदा तो कुछ नहीं होगा, but yes, keep going, Patel. किस को किस चीज में डाउट्स आ रहे हैं, प्लीज डू स्टार्ट कमेंटिंग. गुड मॉर्निंग, राकेश. Gold short 3299. Only checking. Okay. Reason of execution. सर त्रिशूल फॉर्म हुआ था 15 मिनट्स में. गोल्ड में त्रिशूल वर्क नहीं होता है, सिर्फ बीटीसी में होती है त्रिशूल. उसमें कोई डाउट्स? योगेश, एनी डाउट्स? वेंकट, एनी डाउट्स? राकेश, एनी डाउट्स? 50% ब्रेक कहाँ पे एंट्री हुआ था? 3299. S2B1 सेटअप के साथ करके बोलो. Right, so you executed the trade in this candle, right? So this is a proper S2B1 setup. Okay. Reason 50% break and continue. Minimality identify करने में problem हो रही है. What is minimality? Right? Example, when there is a supply or a demand allotted. Okay. Just for an example, this is our demand, and let's consider this as the supply.
whenever the market is in the direction, correct? And immediately you see a rejection before 50%, मतलब ये जो लाइन है ना 100% सप्लाई का, उस सप्लाई का 50% के अंदर ही आपको फर्स्ट रिजेक्शन मिलता है. एंड देन इफ इट ब्रेक्स एंड कंटिन्यू, एग्जाम्पल, when it continues, this is called as minimality M1, right? Whenever the minimality M1 creates, you can directly allot that trade still 150%, right? So यहाँ पे ट्रेड क्या होगा, अलोकेशन 150 होगा, 150 होने के बाद 150 से एक रिट्रेसमेंट एंड देन 200% टारगेट. So this is minimality M1, right? In the scenario of M2 क्या होगी, 100% के अंदर 50% के ऊपर जब मार्केट जाती है, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में जहां पे आपको रिट्रेसमेंट दिखती है above 50%, below 100% of the supply, and then market tends to continue, right? This is minimality M2. इसका टारगेट्स डायरेक्ट 200% तक होती है. ओके, सो यहाँ पे 150% बहुत रेयरली हिट होता है, बट जब भी M2 क्रिएट होता है, मार्केट डायरेक्टली स्ट्रक्चरल वे में मूव होती है. ओके, सेम सिनेरियो इन bearish markets. If the market is coming down slow and steadily, right, 50% के पहले ही उसके ऊपर जब रिजेक्शन लेता है, तो this is called as M1. And then in the continuity, what do you notice? The market will come down till 150%, right? So till 150% will be your first target. 150% से फिर से एक रिट्रेसमेंट मिलेगी, उसी रिट्रेसमेंट के साथ कंटिन्यूटी तक 200% तक जाएगी. ओके, अगर 50% के नीचे कंटिन्यूटी में आती है एंड 100% जो डिमांड है उससे पहले एक रिट्रेसमेंट लेती है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 50% के नीचे आया, उसके बाद रिट्रेस हुआ मार्केट 100% के ऊपर एंड उसके बाद ब्रेक देती है, तो समझ लेना मार्केट डायरेक्ट इट विल गो टिल 200%, विच इज मिनिमलिटी एम. ओके, सो सिंपल है, जस्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट कहाँ कहाँ पे मिनिमलिटी जनरेट होता है, वहां वहां पे अलोकेशन देखना होगा, उतना ही. एंड यू डोंट हैव टू बी वरीइंग वेयर एग्जैक्टली द मूवमेंट इज हैपनिंग, हाउ इज इट हैपनिंग, राइट? इट विल डेफिनेटली मूव टिल द प्लान ऑफ एक्शन. सेम एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं चार्ट के ऊपर दिखाना चाहूँ, तो लेट मी शोकेस यू ऑन द चार्ट्स हाउ इट लुक्स, राइट? हमने यहाँ पे एक डिमांड डाला था, राइट? सो इन दिस परस्पेक्टिव दिस वाज माय डिमांड, राइट? इस डिमांड जब मैं 100% अलोकेट करूंगा, व्हाट डिड आई नोटिस? ओके, देयर वाज अ मिनिमलिटी 50%, राइट? सो टारगेट क्या होगा? 150%. कहाँ से रिजेक्शन ली? 150% से. सेम सिनेरियो लॉन्ग की तरफ जब हम बैठे थे, तब लॉन्ग के लिए जब हम डाले थे यहाँ पे, व्हाट डू वी नोटिस? मिनिमलिटी M1. टारगेट क्या होगा? फर्स्ट 150%, 150% हिट हुआ, उसके बाद जाके व्हाट डिड मार्केट टेंड टू डू? मार्केट कंप्लीटेड 200%, राइट? उसके बाद जब ब्रेक एंड कंटिन्यूटी में जनरेट होती है, देन दैट्स व्हेन इट्स कॉल्ड एज सरप्लस, राइट? इन द एक्शन प्लान सरप्लस कहाँ से लोगे? ये entire movement till 150% will act as the surplus, right? In the surplus action plan, what did we notice? Okay, फिर से हमारे पास minimality generate होगी, right? So इस minimality action plan को हम जब डबल करते हैं, that's when 150% rejection we got, then 200% rejection. सेम सिनेरियो, व्हाट आर यू नोटिसिंग? 1 आवर में अगर जब मार्कआउट करने आते हो, दिस वाज माय फर्स्ट डिमांड अलोकेशन व्हिच वाज टुवर्ड्स द शॉर्ट साइड, राइट?
तो यहाँ पे 200% से रिजेक्शन लिया, सॉरी, बिलो 50%, अबव 100% से रिजेक्शन लिया, राइट। उसी पॉइंट ऑफ एक्शन के साथ मार्केट कंटिन्यूटी में ब्रेक दी। तो व्हाट इज द टारगेट्स फॉर दैट? एम टू का टारगेट्स डायरेक्ट 200% है। अगर इन 15 मिनट्स इफ इट ब्रेक्स एंड कंटिन्यूस, देन वी विल ड्रॉ द सरप्लस, जो कि हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, right? That's how you look into the perspectives and allocate the trades in the directions of the market. Okay. Please explain the trade entry after the circulating demand built today morning. There was no circulating supply today. Okay, आप इंडियन टाइम फ्रेम पे देख रहे होंगे। वन सेकेंड ना। We're talking about this perspective, right? Because this was as per the Indian time frame. हमेशा एशियन सेशन में फर्स्ट ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन देखना है तो लुक इन पर्सपेक्टिव ऑफ यूटीसी, नॉट इन इंडियन टाइमलाइन। ओके, सो हमेशा याद रखिए, सर्कुलेटिंग सप्लाई जब बिल्ड हुआ, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग द मार्केट टेंड्स टू डू? मार्केट टेंड्स टू हंट डाउन ईच एंड एवरी प्लेयर हु इज सिटिंग इन द जोन ऑफ एक्शन, करेक्ट? Did market do that? Yes, definitely. उसके बाद we had a selling pressure. With the selling pressure, market gave an indication of a reversal indication through the volumes. अगर वॉल्यूम में देखोगे, what was the high volume indication? इसी कैंडल पे हमको पता चल गया था market could reverse. Correct? So from this point of action, whenever there was a circulating supply, do we have a high volume structure in the current stage? No. So what you will be doing? You will be holding the trades in the direction of each and every selling pressure allocation, right? उसके साथ 15 minutes में definitely this indicated again a selling pressure. Where could I have entered? You could have entered in this candle, or else you could have waited for an intact level and entered over here. Okay, so plan out in perspective of UTC, not in perspective of Indian timeline, please. So doubts in MTSL many times if I said SL plus 1 pip after 5 pips. Sorry. Okay. SL plus 1 pip after 5 pips, then market takes XL, then took direction. Usma, हम 1 pip पे काम करते ही नहीं है, right? What is the first allocation? Asian session है तो 20 pips, London New York session है तो 40 pips, right? You had executed, just for an example, you had executed a trade over here. Is it in my risk to reward allocation? No, right? So in that perspective, where will I enter? I'll wait for a right allocation point. I could have entered over here, I could have entered over here, because these are the exact execution points, right? With this plan of action, समझो यहाँ पे आपने 40 पिप की एसएल रखी, मार्केट आपको मूवमेंट दिया है 50 पिप की। ओके, सो 50 पिप जैसे ही मूवमेंट होता है, यू विल नॉट allocate it in the same running candle, क्योंकि रनिंग कैंडल्स क्या होते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं, करेक्ट? सो द कैंडल विच हैज गिवन यू 50 पिप शुड क्लोज, रिमेंबर 50 पिप्स कैंडल क्लोज होने के बाद the next candle, when it converts green into red in the bearish movement, that's when you will move your CTC plus 10 pips SL, not prior to that. Okay, so that is how you have to be looking into the markets while allocating an SLs and MTSLs, right? So CTC plus 10 pips यहाँ पे रखा, 50 पिप का कैंडल क्लोज हुआ है, MTSL 30 पिप तभी रख सकोगे जब आपका सेकेंड कैंडल रनिंग में 70 पिप्स के पास चल रहा हो, करेक्ट? अगर एक रनिंग कैंडल में ही आप CTC प्लस 10 रखते हो, उसके बाद उसी रनिंग कैंडल में MTSL लेके चलते हो 30 पिप्स का, does it make sense? No. Okay, so always follow the rule of right execution. Okay,
So wait for the second candle closure. On that, keep CTC plus MTSL. ओके, राकेश का हो गया, पटेल का हो गया। एक्स्ट्रा गोल्ड 5:30 AM UTC। हाँ, लॉन्ग का ट्रेड था ना, दिस वन, राइट? So in this scenario, what do you notice? Okay, example wise, you had executed the trade with S2B1 over here in this candle, correct? So in this candle action plan, first you have 40 pips SL. Once the 40 pips SL is kept, what should be your second plan of action? Okay, market is moving up and down in the range. So will you be able to move the SL to CTC plus 10 pips? No, you can't, right? When can you move the SL? Okay, the candle you have entered, the second candle is closed above the entry point. That's when you will be looking for an execution perspectives over here. Okay, not prior to that. So follow these rules. You will definitely be able to hold calmly, patientfully in the directions of the market. Okay. Sir, in M1, there won't be any retracement below 50%, and the retracement should continue after 100% only. Then it will complete 200%. Please repeat your question. Good morning, Usman. So I tried with very small amount, 3K only, with 2000 leverage, 15 pips में लो हो गया। गलत कर रहे हो ना? Your risk to reward is not right. What is the lot size that you were executing? अगर 3000 का आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन है, मतलब आपके अकाउंट में $30 का अलोकेशन है, एग्जांपल लेके चलो 30-35। So in this perspective, your lot size should start from 0.01, right? उसके साथ एड ऑन पे 0.01 ऐड होती जाएगी। आप डायरेक्टली 0.1 से खेलोगे तो डेफिनेटली 30 पिप्स में आउट हो जाओगे ना। सो आई थिंक 15 पिप्स में आउट हुआ मतलब 0.15 से खेले आप। या सो फॉलो द रिस्क टू रिवॉर्ड। ओके, गुड मॉर्निंग रितेश।
किसी को भी कोई और डाउट्स है? गुड मॉर्निंग तो सर। थैंक्स सर। Sir, took two trades in gold short, one running 3,900 points. Reason all targets meet, so 1 hour 200%, 4 hour 200% MC 2.0, golden ratio. Second trade 2000 points, same trade that you mentioned at 145. Please go to the setup explanation video and you can look into that, Rakesh. Okay? उस्मा ये नया लेवल्स कौन सा है यार? 3,000 पॉइंट की मूवमेंट तो हुई ही नहीं है. Okay, you meant to say 300 pips. Got it. Okay, cool. 390 pips and 200 pips. Cool. Sir, does price always come to complete 150 or 200 whenever a minimality is formed, or is there also a place where price doesn't complete minimality and reverse? कोई एग्जाम्पल एक दिखा दो यार, अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्लीज राकेश. It always does. Okay. It follows the route. अगर मिनिमलिटी दिख रहा है तो डेफिनेटली इट विल कंप्लीट 150. M1 दिख रहा है तो 150 एंड देन 200 कंप्लीट करेगा ही करेगा. अगर M2 दिखा है तो 200% कंप्लीट करेगा ही करेगा. रेयर सिनेरियोस में M2 में 150% तक ही आ जाता है मार्केट, उसके बाद रिवर्स हो जाता है. रेयर सिनेरियोस आउट ऑफ 100 केसेस लोगे तो 5-6 केसेस वैसा होगा, 150 तक आके रिजेक्शन ले लेगा. But remaining 95% of the time, the market could come down to 200% and take the rejection. Good job, Usma. Keep it up. राकेश आपको ही बोला, right? There is a setup video. Go and check in that. And don't follow S1 setups at the current season. Follow only S2 setups. Sir, your voice is very calm. -5 degrees में आई, आपका वॉइस भी काम ही रहेगा. Anyways, sir, pips and points always confuse me. बिल्कुल. टॉप से लिया था शॉर्ट, जैसे ही शॉर्ट का ट्रेड लिया उसके बाद सर नीचे ही गिर रही है. अच्छा है ना.
I'm glad people are converting from loss making trades to winning trades. Happy for you guys. I won't expect anything more. Keep it up, guys, everyone. Every day we are doing. एंड जिन जिन को ये पार्टी टाइम याद है, राइट, शॉर्ट ट्रेड होने के बाद लॉन्ग ट्रेड का मजा ही आ गया था. Everything, every day it has followed the levels. Simple. You just have to sit patiently and wait for the targets to complete. That's it. मार्केट उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे. Good morning, Varun. किसी को और कुछ डाउट है? चलो यार, ड्रॉ करके भी दिखा दूंगा. Always start with the screening perspectives. This is the demand, with the demand allocation first with the body, then with the wick, right? So in this perspective, what do we notice? We notice 100% break. With the 100% break, mark out the level 1. With the level 1, what do you see? There was a buying pressure. With the buying pressure, there was a proper intact zone. With the proper intact zone, what is the first plan of action that we'll look for? We'll look for an allocation and perspective of the supply. The first supply was taken under the consideration, 100% rejection, break and continue. So in this perspective, 200% rejection, right? So with this 200% rejection, what is the next thing that we'll be working for? We'll be working for a retracement. In the retracement, how do you look in perspectives? Whenever there is a circumstantial movements, always supply converted into demand when the market is from bearish to bullish, and bullish to bearish, demand converted into supply. So in this scenario, what do I look for? This was my last retracement point. With the last retracement point, I'll be marking out my level of allocations of demand, supply converted into demand, 150% rejection, right? With this 150% rejection, 200% rejection is showcased. With the 200% rejection, what could be my next plan of action? My next plan of action will be taken under the consideration to the previous.
allocation of the moments which will be inconsiderated for the point of interest. Right, in this moment plan, what do I notice? Daily time frame का 200% rejection हो चुका है. So break and continue में I will mark out my 4 hours. What do I notice in 4 hours? I do have a rejection perspective at 150%. 150% होने के बाद market created a buying pressure. Buying pressure के साथ S2B1 था. S2B1 के साथ market break 150% and continue. Why didn't it move till 200% level? Because daily time frame का level allocation point थी. Right? जैसे ही वो level allocation point complete हुआ, what are the next steps that I'll be following? I'll be allocating the structures of the demand. So in perspective of demand allocation, what I'll be doing here, I'll be taking this as the demand point, what will be considered for the marking towards the short side. And with the short side, what do I notice? I notice a minimality M1 created. With minimality M1 created, 150% rejection point. Right? So with the 150% rejection point, what is the next step that I'll be following? Restructure allocation of imbalance, which will be marked for 200 because हमेशा minimality M1 होने के बाद M2 निकालता ही निकालता है. Right, two structure allocations is completed. हर एक retracement कितना आया है हमको यहाँ पे, जितना मेरा previous supply है उतने का ही movement यहाँ पे हमको दिखने के मिलेगी 100%. Right, uske baad at the current stage, how do you look into the perspective of allocation because there is no break of structure? So whatever my previous supply will be in the action plan will act as over here. With this, what do we notice? There is 100% break and continue. With the 100% break and continue, I have a 200% rejection. With the 200% rejection, what is market trying to do? Market tried to create a S2B1. With the S2B1, market is falling. With this point of interest, what is the next thing? Coming down to 1 hour. In 1 hour allocation, how do you look for a structure based build? The structure based build is in form of to the previous. So this is my first demand which will act as the current. So which I'll be taking with the wick because I have an indecisive movement. With the indecisive movement, what do I notice? There is a break and continue. So I'll be marking the 200% minimality area. So now I see there is a break in 200% of minimality. What is the next step? The surplus needs to be marked. So in this scenario, do we have any kind of surplus marked in the zone? No, there is no any kind of surplus marked in the zone. So what will be my next step of action plan? Will I be taking any of this? Definitely. अगर मैं ये डिमांड लूंगा तब जाके मेरा नेक्स्ट डिमांड कंप्लीट होगा. अगर मेरा ये डिमांड लूंगा तब जाके मेरा upcoming demand complete हो. But when there is a surplus in the action, this will be your new allocation point. When this comes into your new allocation point, will you be taking it from this point or will you be taking it from the top? Because surplus is always marked in perspective of the moments which is from the top point, right? So they say mark out what are the next steps that will be taken under the consideration. Allocation of the POI range because the candles is more than 3, so the perspective will be taken. POI मैं directly डालूंगा या previous. Always POIs are marked in perspective of your previous box range. So in this, what do I notice? Market is in the zone. Whichever side the market will tend to break, the opposite direction will be the trade what I'll be carry forwarding in the coming times. So that's how you look in perspective of allocating the trades, being the directions, and allocate the moment. With this allocation, what do I notice? Where all was the execution point? Execution point one was at this point, second was at this point, third was at this point, fourth was at this point, and fifth was at this point. Why this point? Because it was a proper circulating supply. Whenever there is a actual theory created in the moment, market will tend to create an action plan which is built in perspective of hunting down all the retailers to execute the trades in the directions of the market, not against the market. Always keep that in mind and make sure follow the rules.
execute the trades patiently. सर कल बॉटम टू टॉप का लॉन्ग का ट्रेड होल्ड किया 0.1 लॉट पर मजा आ गया फर्स्ट टाइम इतनी देर तक ऑर्डर होल्ड किया. रूल्स फॉलो करोगे तो हर एक ट्रेड मजेदार ही होगा ना. Just follow the rules, don't break the rules, everything will be in control of you guys. The only request. Okay, जो भी मैंने मार्किंग किया था was all mapping with the same structures. आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. अगर आपको एमसी डालना आ गया, उसके साथ प्रॉपर सप्लाई एंड डिमांड अलोकेट आ गया, करना आ गया, no one can stop you. Why no one can stop you? Because किसी का हाथ लगने नहीं दिया है अभी तक ये. Once everyone starts using this, that's when the accuracy will fall. But at the current stage, the accuracy is nearly to 100%. So yes, you guys can hold it, print it, and execute it. मार्किंग में कोई डाउट्स किसी को भी? ये सिर्फ गोल्ड में काम करता है क्या? आप कोई भी चार्ट दो मैम. This is BTC. Rules is simple. Sit patiently. सेटअप के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करो, शांत बैठो, एवरीथिंग विल बी ब्यूटीफुल. जितने भी नए लोग आए हैं, द रूल इज सिंपल. 6 months of back testing, 6 months of forward relay bar testing, 1 month of live analysis. Come with a small capital and execute the trades to build the confidence, compound the capital, and enjoy the profits. To enjoy these profits, you have to let go FOMO, you have to let go greed and fear. मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना फॉलो करो. You guys are sorted. Streaming will be there for next 35 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask. Radhe Radhe Pankaj. How is your trade going on? 76,000 से hold करके बैठे हो.
यहाँ पे आपको एक डिप दिखेगा, ठीक है? सो इस डिप में यू कैन लुक फॉर अनदर एड ऑन. ओके. सर नेक्स्ट फ्राइडे इवनिंग स्ट्रीम कर लेना. एनएफपी है, देखेंगे. एनएफपी में जितना मूवमेंट होता है उसका 3 गुना तो हम रोज कमा रहे हैं ना. तो एनएफपी क्या है? When marking surplus demand allocation in 1 hour, you took the allocation from 12:30 a.m. to 4:30 IST, but didn't take the wick. Why? Because actually surplus allocation is taken under the consideration from the top till 150%. इस point of action से nearest 150% तक लेना चाहिए. राइट. इन द एक्शन प्लान मेरे पास 150% नहीं था, तो उसी मेजरमेंट के हिसाब से मैं 1 आवर में लिया. अगर नोटिस करना चाहते हो व्हाई दिस इज टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट, आई विल गिव यू वन मोर सरप्राइज. राइट, दिस इज माय डिमांड अलोकेशन. व्हाट डू यू नोटिस? राइट. So because of that point of interest, the market is still in the POI zone. So measurement should always match to the perspective of to the previous. वरुण 4 पॉइंट मैग्नेटिक रेंज फॉलो करो. अगर प्रिसाइजफुली डालूंगा तो समझ में आएगा. Yeah. Sir, my accuracy is good in gold, so मैं सिर्फ गोल्ड में ही कर रहा हूँ. BTC स्टार्ट करूँ या नहीं? Once you cross the level of $15,000 in your account in gold, then move to next. Okay? तब तक के लिए गोल्ड में ही रहो, गोल्ड में पैसे बनाओ. जैसे $15,000 पार करते हो, तब जाके इस $15,000 से $3,000 BTC में रखो ट्रेड करने के लिए. राइट. एंड उसमें से 5,000 will be in your gold, remaining you will withdraw and keep it safe in the bank. Bank in the sense, I'm not talking about bank. In our terms, bank is called as SWP, systematic withdrawal plan, wherein every month you deposit for 1 year till the time it creates corpus of 1 crore. After that, at the rate of 7.86, every month plan to withdraw 3% of the income, wherein at the last 7th year, after 7 years, your corpus will be 14 crores, and every month you'll be withdrawing somewhere around 1.6. So this is our bank. So follow this SWP. Hybrid model में करना, normal में मत करना.
एंड जितने भी लोगों का 100K पार हो चुका है, create 3 sources of income with 50,000. Okay. एंड जिनका 1 million हो चुका है उनका पास तो ऑलरेडी प्लान है. Any doubts you guys are getting? Tosif, how is your execution going on? सुनने में आया कल एक ट्रेड लिया था, अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा था, MTSL नहीं फॉलो किया. हाँ, क्या हो गया? एंड CTC पे आउट हो गया. Got it, sir, but still need clarity on the surplus context. How many trades did you execute so far in last 2 months, Ritesh? डेमो अकाउंट की नहीं बात कर रहा हूँ, रियल अकाउंट. What is the accuracy? Accuracy in the sense win to lose rate.
And what is the holding? What is the pip range that you're holding for? More than 90%, sir. Just yesterday took a trade and held it till 500 pips. Once you cross 95%, let me know. That doesn't matter. Many lot hai, a whole lot, sir. Once you cross 95%, let me know. Okay. And if you're losing, you're giving only 40 pips and 20 pips, right? फर्स्ट ट्रेड था ना सर एमटीएसएल प्लस तीड़ा ग्रीन में चला गया. Okay. All the LTD members and MNP members intact level तक plan of action करो. Pachal was looking for 15 minutes intact level. There it took 1 hour intact level, sir. This was my mistake. I could have looked at 1 hour intact level as well yesterday. No worries. कभी कभी गलतियां होती है. कभी कभी माफी भी ठीक है. Don't repeat the same mistake.
गोल्डन क्रिकेट जीसी। भाई मुझे समझ में नहीं आता आपका ये ट्रेडिंग मेथड। प्लीज बेसिक टू एडवांस वीडियोस अपलोड कर दो। बेसिक टू एडवांस वीडियोस अपलोडेड है। गो टू होम टैब, फर्स्ट watch MC concept. After that, come down to supply and demand. After that, come down to volume and liquidity DO. You will start understanding what we are doing here. Okay. After this, जो भी ये तीन इसमें सीखे हो, applied on back testing 6 months, forward relay bar testing 6 months, live analysis for 1 month. Okay. Post that, bring a small capital, build the confidence in execution, then compound the same value to the higher numbers. Sure, sir, I'll not repeat it again. Great. सर बीटीसी थोड़ा एनालाइज कर दो, आज 5:30 PM तक का प्लान। डायरेक्ट 5:30 PM का प्लान। प्लान इज वेरी सिंपल नो। 5:30 तक का क्या है, उससे लंबा ही दूंगा चलो। मिनिमलिटी क्रिएट हुआ है, इंटैक्ट लेवल तक का प्लान ऑफ एक्शन है। स्टेप 1, स्टेप 2 with the setup only. Sir, according to you, there are 4 entry points, but what was the reason जो immediately after the reversal पर? Sir, according to you, there were 4 entry points, but also immediate after reversal पर small doji candle पर। कौन सा small doji? मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही बन रहे हैं। ओके, शॉर्ट रेट की बात कर रहे हो, राइट? Entry 1 is over here, S2B1. Second entry is over here, S2B1. Third entry over here, why? Because it was a circulating supply, right? And the fourth entry was over here with a break of structure and with 3 wing setup. And जिसको भी ये समझ में नहीं आया क्यों मार्केट नीचे के लिए आ रहा है, थोड़े देर पहले रिवाइंड करके देख लो। प्रीवियस पीओए हमने डाला था विच वाज दिस। जिस भी तरफ का ब्रेक होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड। ओके, रिवाइंड करके देख लेना जब एक्सप्लेन कर रहा था मैं।
Yes, sir. I'm asking about the one order. Timing बता दो, please. सही सही क्लियर हो गया सॉरी ओके थैंक यू सो मच रूल्स आर सिंपल इंडिकेटर आपका आंख को बनाओ उतना ही हर एक चीज आपको आसानी से पता चल जाएगी मेक योर आईज द बेस्ट इंडिकेटर एंड द एक्यूरेट वन एंड गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक हमेशा याद रखना है इस चीज को last 10 minutes whatever doubts you guys are having please do ask पंकज 5:30 तक का प्लान तो आपने सुन लिया अगर मार्केट रिवर्स होता है तो 1 आवर में त्रिशूल फॉर्म होगा अगर 1 आवर में त्रिशूल दिखता है तो रिवर्सल ना उससे पहले नहीं ओके यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस नॉट इन फ्यूचर्स ओके ठीक है नेक टू नेक लेके चलो लंदन सेशन तक नो प्रॉब्लम्स बट पोस्ट दैट नेक टू नेक लेके चलना ठीक है हाँ वो पता है 76 से बेटे ऊपर के गुड वन max profitable range is between 107 to 111 break even is 1048
हाँ है ना. Cool. Got it. डेली लाइव कब से स्टार्ट होगी सर? यार टिल जून जुलाई इट्स डाउटफुल. जब तक वो कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होगा तब तक डाउट है. सर वन डाउट पूछो ना पंकज. Sir, is that surplus right side which you marked the right side of your chart? Yellow line. वर्षा ने तुम्हारा भी फोटो भेजा है. Even yours is right. On the break of 150, mark the 200. उसके बाद ये वाला टारगेट होल्ड कर लेना. ठीक है तो सर. ऑप्शंस राइट एक्सपायरी चूज करने में प्रॉब्लम आती है. सिंपल है. ऑप्शंस में ट्रेड करना है वो भी क्रिप्टो. स्विंग पकड़ के चलो. मिड एक्सपायरी एंड मंथली एक्सपायरी. ओके. सो इन दिस पर्सपेक्टिव अगर आपका कैपिटल $10,000 है, मिड एक्सपायरी में होगा 2,000, मंथली एक्सपायरी में होगा 5,000. Remaining balance will be in your account to trade intraday. Okay. So follow this rule. It will be easier. जी सर. ओके सर. किस चीज में करना चाहते हो स्विंग ट्रेड?
क्रिप्टो में करना चाहते हो तो एवरी पीओए विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट. गोल्ड में करना चाहते हो तो 4 hours शुड इन लाइन विथ योर 1 hour. Gap range between first and second should be always in perspective of 300 to 400 pips. गोल्ड के लिए बीटीसी पीओए रेंज ऑफ एक्शन से होगी हमेशा. Always remember one thing: don't overtrade, follow the rule, trade fearlessly in the directions of TTS. Make sure follow the proper setups. And one good trade is a trade that is taken with your analysis, with your mindset and psychology, because that is your money which is in the game. Try to protect it, not to blow it. This is Nitesh signing off. मिलते हैं next Friday. तब तक के लिए take care. Bye bye. Happy weekend.